Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Learning with Sonia Miraj. Now, in this poem, in this video, we're going to discuss the poem that is The Thought Fox, that is written by the Ted Hughes, as we had discussed the previous poem of the same poet. So, The Thought Fox is a poem written by Ted Hughes and published in 1957, and it was studied in celebrated poem that explored the process of artistic creation through the metaphor of a fox. आप कहते हैं कि जो पोम है ना, ये स्टार्ट होती है, स्पीकर जो है वो एक कोई डार्क रूम में है, वेट कर रहा है इंस्पायरेशन का, और जो स्पीकर है वो लिसन कर रहा होता है साइलेंस को, तन्हाई को। वो था ना शेर में, तन्हाई को तन्हाई में तन्हा कैसे छोड़ दूँ, तन्हाई ने तन्हाई में तन्हा मेरा साथ दिया है। तो वो उस टाइम he became aware of the presence, and that was symbolized by the fox. The fox gradually materialized as a thought. और एक ये थॉट होता है, एक आइडिया होता है जो स्पीकर के माइंड में होता है, असल में नहीं होता। अब हम देखते हैं ये जो पोएम है इसमें डिस्क्राइब करते हैं जो फॉक्स की जो मूवमेंट होती है और वो जिस तरीके से वो ट्रेस कर रही होती है एक ब्लैंक पेज पे, और जो फॉक्स होती है वो यहाँ पे एज अ मेटाफर है फॉर द क्रिएटिव स्पार्क, जो उसको उठाती है, इमेजिनेशन की तरफ लेके जाती है, किसको, पोइट को, और उसकी लाइफ में जो एम्प्टी स्पेस है उसको कवर करती है, ठीक है। और जो पोइट है वो विविड और सेंसरी लैंग्वेज को यूज़ करता है ताकि फॉक्स की मूवमेंट को कैप्चर करके एक बता सके कि असल में है कैसी उसकी मूवमेंट। जैसे आगे पोएम बढ़ती जाती है, जो फॉक्स की जो प्रेजेंस है वो टेंजिबल होती है, और जो पोइट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है एक्ट ऑफ राइटिंग और द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एक्ट, एंड द फोक्स अराइवल एंड द क्रिएशन ऑफ द poem become intertwined, emphasizing the connection between the artistic and their work. Like you can say, the thought fox is often interpreted as a representation of the mysterious and exclusive nature of inspiration. यानी असल में वो नहीं होता, वो सिर्फ मिस्ट्री होती है। इट एक्सप्लोर द नोशन एंड द क्रिएटिविटी इज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस दैट इमर्ज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द माइंड, ठीक है। और ये पोम जो है ये सेलिब्रेट करी होती है पावर ऑफ इमेजिनेशन को, एक्ट ऑफ राइटिंग को, कि कैसे हम अपनी राइटिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए कुछ भी राइट कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे थीम और उसका स्टाइल। अच्छा, जो पहला थीम है वो है क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक इंस्पायरेशन। जो पोम है वो delves होती है into the process of artistic creation and the emergence of inspiration. It highlights the transformative power of the imagination and the way ideas come to life through the act of writing. And the second theme is the nature and the wild. The fox in the poem represent the untamed and instinctual aspect of nature. It symbolizes the primal force that fuel creativity and the connection between the human mind and the natural world. The third one is exclusiveness and mystery. The folk's presence in the poem is depicted as exclusive and mysterious. It emphasizes the intangible nature of inspiration and the way it appears and disappears like a fleeting creature. यानी इसमें वो देखो ना, मिस्ट्री शो करता है कि कैसे वो फॉक्स अपीयर होती है, अचानक से डिसअपीयर हो जाती है, उसकी ना एक फ्लीटिंग क्रिएचर को शो करता है, ठीक है। Metaphor and symbolism. The use of the fox as a metaphorical representation of creativity and artistic inspiration demonstrate the poet's skills in using symbolism to convey complex ideas and experience. This one is imagination and expression. We can see the poem explore the relationship between imagination and expression. ये जो poem है इसके अंदर हम एक relationship देखते हैं imagination और expressions के दरमियान में। वो बताता है कि कैसे वो translate करता है words को और कैसे अपनी act of writing को use करते हुए अपना idea और experience बताता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेटामॉर्फोसिस, ये जो पोम है ये सजेस्ट करती है एक्ट ऑफ क्रिएशंस को और इमर्जेंस ऑफ फॉक्स को। आगे जो थॉट फॉक्स के सिंबल्स हैं उसको डिस्कस करता है। द फॉक्स सिंबलाइज क्रिएटिविटी, इंस्पायरेशन एंड द पोएटिक इमेजिनेशन. इट रिप्रेजेंट द मिस्टीरियस एंड एक्सक्लूसिव नेचर ऑफ आर्टिस्टिक आइडियाज अपीयरिंग एज सिंबल ऑफ द पोट्स थॉट्स एंड द इमर्जेंस ऑफ इंस्पायरेशन. द डार्कनेस है वो एक रूम के अंदर एट द बिगनिंग ऑफ द पोम सिंबलाइज कर होता है विविड और एम्प्टीनेस को, और ये क्रिएटिविटी से पहले का टाइम बता रहा होता है कि स्टेट ऑफ एंटिसिपेशन होती है, उस टाइम का पोइट जब वेट कर रहा होता है इंस्पायरेशन कब आएगी भाई, और कैसे पोइट इंस्पायर होकर अपनी राइटिंग की तरफ कन्वर्ट होगा। ये उस चीज़ का सिंबल है, यानी एम्प्टीनेस का सिंबल है, नथिंगनेस का सिंबल है, यानी कुछ भी नहीं है, डार्कनेस, एम्प्टी है, दिमाग खाली है,
और कुछ भी दिमाग में नहीं है, उसका सिंबल है वेटिंग हो रही है भाई कि कुछ ना कुछ आएगा दिमाग में जो उसको इंस्पायर करेगा, देन ही कैन राइट बेटर। सो देन उसके बाद फिर ये जो फॉक्स है वो उसके दिमाग में आती है, इसीलिए उसे थॉट फॉक्स नाम रखा है पोइम का। अब है द पेज, द blank page symbolize the creativity space waiting to be filled. It represents the poet's canvas where the thoughts and the ideas can be transcribed into the words come to the life. The footprint that is left by the fox on the blank page symbolize the trace of the creativity or evidence of the poet's thoughts taking shape, and it represents the tangible evidence of the artistic imagination and the transformative power of writing. Abheda night in the poem symbolizes the realm of the subconscious, the time when the imagination can roam freely. कहते रात एक ऐसा टाइम है जहाँ पे इमेजिनेशन कहीं पे भी आवारा गर्दी कर सकती आराम से सुकून से, कोई उसे नहीं रोकेगा, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द फर्टाइल ग्राउंड फ्रॉम विच क्रिएटिविटी और क्रिएटिव आइडियाज इमर्ज। ये फर्टाइल ग्राउंड की बात कर रहा है जिसके अंदर से आइडियाज क्रिएटिविटी इमर्ज होती है, निकलती है। और ये रात एक सही वक्त है क्योंकि उसमें सुकून होता है, पीस होता है, बड़े आराम से राइटर जो है ना वो लिख सकता है। और आप ये कह सकते हो कि ये जो है ना ये एक्सप्लोर करता है नोशन दैट क्रिएटिविटी इज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस दैट emerge फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द माइंड एंड कैप्चरिंग द मोमेंट व्हेन एन आइडिया टेक्स शेप। इसमें वो कहते हैं आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट्स where something else is alive beside the clock's loneliness and this blank page where my fingers move. Through the window, I see no stars. Something more near, deeper, within darkness is entering the loneliness. यानी वो इसमें पता क्या कहना चाह रहा है, कह रहा होता है कि वो सोच रहा होता है कि वो कुछ लिखे, डार्क है, एम्प्टीनेस है वहाँ पे। और वो पहले भी बता चुका है लिखने के लिए 3 चीज़ें रिक्वायर होती हैं, पीस, लोनलीनेस जिसे हम सॉलिट्यूड भी कहते हैं, और ब्लैंक माइंड। वो कहता है सब कुछ है उसके पास, ठीक है। और अब वो अपने पेज के ऊपर उंगलियां घुमा रहा है, ठीक है, खाली पेज के ऊपर। और वो उस टाइम इमेजिन कर रहा है, क्या इमेजिन कर रहा है, फॉक्स को। कहते हैं थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, कोई स्टार नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ तन्हाई है, अकेलापन है। रात क्या शो कर दी थी, एम्प्टीनेस को शो कर दी थी, उसके थॉट्स को भागता हुआ शो करती, रोम करता हुआ। कोल्ड delicately as the dark snow. A fox nose touches twig leaf to eyes serve a moment that now and again now and now and now sets neat prints into the snow between trees and whirly a lame shadow legs by stems and in hollow of a body that is bold to come. Here we see that the fox, the arrival of the fox and the creation, it is basically the creation of the poem. It emphasizes the connection between the artist and their work. We see that the thought fox contain a noiseless scene that is a symbol of the peace. We can also consider the fox as carefully lurking in the dark forest, and it symbolizes the invocation and the mouse for the speaker. Or in easy wording, we can say it's the representation of mysterious and exclusive nature of inspiration. Across clearing an eye, a widening, deepening greenness, brilliantly, concentratedly coming about its own business, still with the sudden sharp, odd stings of fox, it enters the dark hole of the head. The window is starless, still the clock ticks, the page is printed. Now this is time, this is the end. He's telling, he's concluding the poem, in which the poet is representing an eye that is metaphorically referred to the knowledge, inspirational wisdoms, and the fox arrival that represent the dark night, that is the arrival of the inspiration for the speaker. When we're going to talk about the page is printed, it's mean that after inspiration is able to write, the whole poem is acted as a stage of writing or poem, from imaginations to the realization of that imagination in the form of poem. Like he had written a poem, and so that page comes out, the thing, the imagination comes on the page.